Then comes the second topic, the second debate, and the second debate was between French and British drama, which is great, whether French drama is great or British drama is great. Now Lycidius, who supports French drama, argues that French drama is better than British drama. Why is French better than British? Because he says that French adhere to the classical principles. वो कहता है कि French drama इसलिए अच्छा है क्योंकि French ने क्या किया, फ्रांस के राइटर्स ने क्या किया, उन्होंने क्लासिकल्स फॉलो किया, उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम फॉलो की, यूनिटी ऑफ प्लेस फॉलो की, यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो की, जो 3 यूनिटीज एरिस्टोटल ने दी थी, कहता है कि वो उन्होंने फॉलो की, जो कि ब्रिटिशर्स ने फॉलो नहीं की। अब चूंकि फ्रेंच जो हैं वो क्लासिकल्स के ज्यादा करीब हैं, क्लासिकल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनके कही हुई बातों पे चलते हैं, इसलिए जो फ्रेंच हैं वो ब्रिटिश राइटर्स से बेहतर। और दूसरी बात जिस पे वो फ्रेंच राइटर्स को डिफेंड करता है वो है कि जो फ्रेंच राइटर्स हैं दे मेंटेन्ड द डिवीजन ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। कहता है कि जो फ्रेंच राइटर्स थे उन्होंने ट्रेजिडी को ट्रेजिडी में लिखा और कॉमेडी को कॉमेडी में लिखा, लेकिन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जो थे उन्होंने इतना गंदा काम किया है कि उन्होंने ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिला दिया और उन्होंने कहा कि ये ट्रेजी कॉमेडी है। और वो कहता है कि इतना एब्सर्ड इतनी एब्सर्ड टाइप ऑफ ड्रामा कोई भी नहीं हो सकता है दुनिया में जितना कि ये ट्रेजी कॉमेडी है जो इंग्लिश, जो ब्रिटिश राइटर्स ने लिखना शुरू की। तो चूंकि ब्रिटिश राइटर्स ना ही क्लासिकल्स को फॉलो करते हैं और उन्होंने एक ये ट्रेजिडी कॉमेडी जैसे एक बकवास जॉनरा शुरू किया, इसलिए जो है ये ब्रिटिश राइटर्स जो वो अच्छे नहीं हैं। और फ्रेंच राइटर्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि एक तो वो क्लासिकल्स को फॉलो करते हैं, दूसरा जो क्लासिकल्स ने डिविजन्स बता रखी है कि ये ट्रेजिडी है और ये कॉमेडी है, जब आप ट्रेजिडी लिखो तो उसमें कॉमेडी के एलिमेंट्स मत डालो, जब आप कॉमेडी लिखो तो उसमें ट्रेजिडी के एलिमेंट्स मत डालो। तो चूंकि वो ये सारी चीजें मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इसलिए लिसिडस के हिसाब से जो फ्रेंच हैं वो अच्छे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट लिसिडियस थिंक्स दैट फ्रेंच राइटर्स आर बेटर बिकॉज दे फॉलो द क्लासिकल्स, दे फॉलो द डिविजन्स ऑफ द क्लासिकल्स, दे फॉलो द रूल्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लासिकल्स। बट टू दिस आर्ग्यूमेंट which was in support of French writers comes forward Neander and he argues in favor of tragicomedy। 3 चीजें थी इनफैक्ट जिसको लेके नियंडर को जवाब देना था। एक ये कि जो फ्रेंच हैं वो जो है क्लासिकल्स को फॉलो करते हैं और ब्रिटिश जो है वो क्लासिकल्स को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश थे चूंकि वो मॉडर्न्स थे, इसलिए नियंडर को सबसे पहले मॉडर्न्स को सपोर्ट करना था, जिनको कि पहले यूजीनियस ने सपोर्ट किया था। वो अब मॉडर्न्स चूंकि वो यूनिटीज फॉलो नहीं करते थे, तो अब उसको पहले वो चीज डिफेंड करती है कि जो मॉडर्न्स हैं, जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, वो यूनिटीज को क्यों नहीं फॉलो करते हैं। और इसके जवाब में नियंडर कहता है कि जो व्हेन यू फॉलो दोज यूनिटीज ऑफ एक्शन इन पर्टिकुलर, सो यू कम अप विद अ वेरी नैरो प्लॉट विद अ नैरो स्टोरी। कहता उसमें फिर स्पेस नहीं रहती, जगह नहीं रहती बहुत ज्यादा बात करने की। तो इसलिए इंग्लिश राइटर्स ने क्या किया कि उन्होंने जो प्लॉट था, जो यूनिटी ऑफ प्लॉट थी, उसको थोड़ी ढील दी। वो क्लासिकल्स के अगेंस्ट नहीं बोलता। नियंडर डज नॉट स्पीक अगेंस्ट क्लासिकल्स इन दिस, ही सपोर्ट्स मॉडर्न्स बट ही डज नॉट डिस्पैरेज द क्लासिकल्स, ही डज नॉट अब्यूज द क्लासिकल्स। ही सेज दैट द रूल्स सेट बाय क्लासिकल्स वर गुड, बट व्हाट ब्रिटिशर्स हैव डन टू दोज रूल्स इज दैट दे हैव जस्ट मेड देम more practical. They have worked upon those rules in such a manner that we can accommodate few more things in it. For example, we can accommodate tragedy and comedy in one particular genre, and the genre seems to be tragicomedy, and he says that this is better. Why? Because you have one play where you can express all kinds of emotions. Otherwise, if you are writing tragedy, then you have no space for comedy. If you are writing comedy, you have no space for tragedy. But if you are writing tragicomedy, you have space for both tragedy and comedy. So he supports British writers for their innovation. He says that they have innovated upon the classicals. They have come up with a new concept, with a new idea, and that new idea being that unity of action is not very important. We can have a subplot, and with subplot हम जो है 2-4 बातें और मजीद कह सकते हैं। और इसी तरह से जो है ट्रेजी कॉमेडी के जरिए हम और जो है एक नई तरह का एक एनर्जी डाल सकते हैं लिटरेचर में, जो कि इंग्लिश राइटर्स ने किया, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने किया। तो ये कहना कि ट्रेजी कॉमेडी एब्सर्ड है, ये सही नहीं। नियंडर कहता है कि what we have done, that is what British writers have done, we have invented, increased and perfected a more pleasant way of writing.
And what is that more pleasant way of writing? That is tragicomedy. हमने उसको इन्वेंट किया, हमने उसको इंक्रीज किया और हमने उसको परफेक्ट किया। पर निएंडर यहीं पे नहीं रुक जाता, वो इसके बाद फ्रेंच को और क्रिटिसाइज करता है, फ्रेंच राइटर्स को। उनको कहता है कि ही क्रिटिसाइजेस देम फॉर देयर स्मॉलनेस। उनके प्लॉट्स देखो, बस एक कहानी में जुट के रह जाते हैं और उसके अलावा कोई बात नहीं कहते। सो व्हाट दे हैव, दे डू नॉट हैव broad scope in their narrative. They do not have much scope in their narrative to accommodate more things, to accommodate more plots, to accommodate more themes, to accommodate more style or more elements of writing of writing in their plays. So that is why he says that उनके जो plays होते हैं उनमें बहुत सी कमी रह जाती है जब वो लिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि हम यहाँ से आगे ना बढ़ जाएं, हम यहाँ से आगे ना बढ़ जाएं, हम ये रूल ना तोड़ दें, हम ये रूल ना तोड़ दें। तो इन सारे चक्रों में जो है they cannot write a good elaborate piece of work. He goes on to say that French have never created a great playwright, but he says that British have. And here he praises Shakespeare, he praises Ben Jonson. He says that William Shakespeare was one of the most comprehensive soul. He had greater scope towards writing and he was more faithful to the human life. And he says with regards to Ben Jonson, he says that he was the most judicious writer that any country has ever had or any country has ever produced. So he says that since the French have not produced the playwrights of the caliber of William Shakespeare, of the caliber of Ben Jonson, so that is why the British drama is superior to the English drama. British drama is better than French drama. Now that was the second debate between Lycidius and Neander. Lycidius supported French, and the argument that he had in favor of French was that because French followed the classical, that is why they were great. But as opposed to that, Neander said that British writers, they invented, they increased and they perfected what the classical had to say, and that is why the Britishers would be far better a writer than the French writers. And because France did not produce the writers like William Shakespeare and Ben Jonson, that is also a reason that the British drama is better and far greater and superior to the French drama.